मिटा देता हूँ. What is the greenstone? What is the greenstone? And then the name comes as greenstone. Greenstone. So greenstone is a rock which is found during Archean era. Archean time. So this rock is a basic igneous rock. Basic to ultra basic igneous rock which is metamorphosed dominantly in green schist facies. Amphibolite दिया नहीं है. Dominantly green schist facies. So rock is very rich in chloride. That is why it appears green. Green. Very low grade metamorphism. Archean time it is not highly metamorphosed. It is very low grade metamorphism. So if you remember our geological map of India, Dharwar craton is there. Dharwar craton. Dharwar craton. What is this rock? Below. I am drawing a line. Yeah? This is a granulite terrain. Southern granulite terrain. Southern granulite terrain. This is Dharwar craton. Huh? So somebody asked you what is the dominating rock type in Dharwar craton? Answer is greenstones. These are greenstones. Archean time, na? These are greenstones. Double yeah? Greenstones. What are the greenstones? Parent rock is a basic igneous rock. A basalt, picritic basalt. Or there are some ultra basic rocks. Peridotites, comatiites. So they are metamorphosed, you know. Either they are not metamorphosed, still they are preserved, no metamorphism, or metamorphised to very lower grade, lowest grade. That is why they appear very greenish in color. So it is called greenstone. So most of the Archean terrains in India or worldwide, they are dominated by the greenstones. There is no high grade metamorphism in Archean times. There is no plate tectonics. अब high grade के लिए बहुत burial चाहिए ना. I was showing you in that map. So during Archean time there was no plate tectonic. So there was no deep burial. But if you come to granulite terrain, यहाँ क्या मिलेगा आपको? यहाँ भी basic igneous rocks are there. Basic igneous rocks. So ये जो जगह है क्या मिलेगा आपको? Hyperstine, OPX, hyperstine plus garnet plus AN. You understand this? You see that this one you will get, na? Not here. This one. ये वाला मिलेगा कि नहीं? Because they are granulites. If basic igneous rock उसका parent हो, तो this assemblage you will get. So someone suppose moving from Dharwar craton to this place, you will find a transition or a jump, you know, from a green schist facies. यहाँ से it is going to this. It is going to this. Hyperstine is coming. Anorthite is coming. Granulate facies. So OPX is appearing there. So this line, you know, they have identified as a OPX isograde. OPX isograde. That means OPX is, if you come from this side to this side, OPX will start appearing. OPX you understand, na? Hyperstine. But if you go to this terrain, there is no OPX. There is chloride, biotite. The chloride and biotite will convert to hyperstine. So इधर hyperstine आपको मिलेगा. This is OPX isograde. So that is what? A greenstone terrain, a granulite terrain. Greenstone metamorphism, granulite metamorphism. Parent rock is a basic igneous rock. Hello, na? Okay. Now you are lucky that you are visiting to Ambaji area where you will find association of all these parent rocks. Calcareous rocks you will get, basic igneous rocks you will get, and pellitic rocks also you will get. And you will see all varieties. And secondly, as I told you that day, there is a gradation. From green schist facies rocks you will get to granulite facies rocks. So mostly Barrovian type or maybe Busan type, that sort of metamorphism has taken place there.
Okay, so you will be able to see these things in the field this time. Okay, now we will go to a different chapter. Huh? This much you remember. Then when we will come back to this place again, we will discuss. Now, point is, so we have seen pressure, temperature. These are the two principal agents, or principal factors in metamorphism. So there is one more thing I have told you: shear stress. Shear stress. What is the importance of the shear stress? This gives an alignment. This helps in deformation of the rocks. Deformation. But this pressure does not help in deformation. This shear stress helps in deformation. Understood now? Now, how this shear stress comes? From the compression. When two blocks are coming together in plate tectonic setting, when two blocks are coming together like this. Like this. So this part is under compression. So the shear stress develops inside this rock. Shear stress means one slipping over the other. Remember, shear stress ka simple definition is one part slipping over the other. One mineral grain slips over the other. Suppose inside a mineral there is a weak plane, so one part will slip over the other. So those sort of rearrangements takes place because of this compression. That is why it is called a shear stress. This shear stress, what happens? Now creates deformation in the rock. Deformation in the rock. So deformations are what? Deformations are folds. You know, folds is a deformation feature. Then horns are deformation features. Shear zones are the deformation feature. So these are different deformation features or deformation structures. Folds भी हो सकता है, fault भी develop हो सकता है, shear zone भी हो सकता है. Now point is what he is telling. Now when these minerals are being recrystallized under the ET, different zones you saw, na green schist facies, suppose let us take green schist facies. Biotite and chlorite are crystallizing in green schist facies. Amphibolite facies, hornblende is crystallizing or staurolite is crystallizing. When they are crystallizing, these folds are also developing, not together. Faults might be developing, shear zones might be developing. Could you follow this point? Now, it is now our duty to correlate. Suppose biotite is developing. Biotite is developing. And then the rock is also folded. Folding भी हो रहा है, plus biotite is also developing. There comes this word, kinematic. Kinematic. Kinematic means deformation. Deformation. Sin, pre, post. ये जो deformation हो रहा है, some minerals biotite, suppose folding हो रहा है. Folding के time में biotite develop किया, कि folding होने के बाद biotite develop किया, और beforehand it develop. You understood? Two different things are happening. One is folding because of the compression. Another is recrystallization of the minerals. To follow this point, now I have to correlate between this deformation and the metamorphism, the recrystallization of the minerals. So that is what known as timing of crystallization. ये डिफॉर्मेशन का साथ कब क्रिस्टलाइजेशन हुआ है? सपोज आप ऐसा एक बेड आप देखो, एक बेड था, कौन सा बेड था? एक पेलिटिक रॉक का बेड था. पेलिटिक रॉक का बेड था. दिस बेड इज फोल्डेड. हाउ दिस विल बी फोल्डेड? यू नो, दिस बेड विल बी फोल्डेड लाइक दिस. रिमेंबर ऐसा. पहले जब आप प्रेस किया ना, द बेड विल बी फोल्डेड लाइक दिस.
folds are developing. So these are the axial plane of the folds. This is the axis of the folds. These are the axial plane of the fold. These are the axis of the folds. ऐसे ही है ना? Are you able to follow this diagram? Now, my point is, same time also biotite is growing. Why biotite is growing? The pressure and temperature suits to green cyst facies. So biotite is also growing there. This is the pelletic unit. Biotite also will grow inside these things. You have to follow this point. So if biotite grows, how they will grow? Because this fold is developing because of this compression. Okay? Now biotite also will grow inside this. How these biotites will be arranged? How these biotites will be with respect to different elements of this structure? मेरा बात समझे कि नहीं समझा? So if a biotite grain is a flaky है ना? ऐसा. If it grows along with this folding भी हो रहा है, plus biotite भी grow कर रहा है. मेरा बात समझा? That means in kinematic. Kinematic means folding हो रहा है, plus recrystallization हो रहा है. Biotite भी recrystallize कर रहा है, plus folding भी हो रहा है. Now how biotites will be arranged in this fold? कैसे biotite arrange होके रहेगा? That is what to be seen. If you understand that, then you can say this biotite is syn kinematic to this fold. You understood this part now? Yes. Now this biotite crystals will try to align, you know. इसका अंदर biotite develop करेगा ना? इधर तो नहीं करेगा, क्योंकि suppose this is a pelletic unit. This is a suppose quartzose unit. Quartz. इधर quartz है, इधर quartz है. Biotite will grow where? Inside this ना? Yes. यहाँ तो develop नहीं करेगा. यहाँ तो quartz and feldspars are there. Why biotite will grow? Biotite needs iron and magnesium. So inside this biotite will grow. So when biotite will grow, remember they will grow parallel to the axial plane. अभी थोड़ा याद रखो इतना. बाद में स्ट्रक्चरल जो में सार बोलेंगे कैसे डिफरेंट होता है. But for the timing you remember they are all crystallized parallel to axial plane of the fold. मेरा बात समझा? तो ये फोल्ड आप जब देखेंगे हिंज जोन में ये सब ऐसे ऐसे करके जाएगा. हिंज जोन को खाली आप फॉलो करेंगे. सपोज दिस इज ए हिंज जोन. द बायोटाइट्स विल बी ऐसे अरेंज करके बैठा होगा उधर. सो दिस इज ए क्लस्टर ऑफ बायोटाइट दैट विल डिफाइन द ओरिजिनल बेडिंग. ये ऐसे ऐसे बायोटाइट सब बैठेंगे, ऐसे बायोटाइट बैठेंगे, ऐसे 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 ऐसे. So these biotites will be all localized along this layer. They will not be outside. So, but individual crystals, you know, individual crystals will be arranged parallel to axial plane. So that will tell the biotite has crystallized during the folding. So biotite is syn kinematic. Biotite is syn kinematic. Syn kinematic to fold. This statement could you understand na? Syn kinematic मतलब during that time folding. Now, but biotite will not grow here. Suppose I will show you a biotite rich layer. ये लेयर मैं आपको दिखाऊंगा. ये लेयर क्या होता है? लेयर होता है S0 बेडिंग. पहले बेडिंग था वो, उसके अंदर सब बायोटाइट गिविंग एलिमेंट्स वर देयर, आयरन मैग्नीशियम उसके अंदर थे, तो वो सब रिएक्ट करके बायोटाइट बन गया है. सो इंडिविजुअल बायोटाइट्स विल क्रिस्टलाइज पैरेलल टू एक्सियल प्लेन ऑफ द फोल्ड. दैट इज द वर्क ऑफ द शियर स्ट्रेस. फोल्ड भी डेवलप करूंगा, plus I will develop biotite grains which will be have some alignment with respect to this fold. Understood this part ना? ना हम क्या अभी करेंगे, हम बाहर जाएंगे, थोड़ा देखेंगे. We will see these features in detail. Now ये भी देखेंगे और एक क्या देखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, बोलता हूँ. Now suppose ये आप देखो ऐसे फोल्ड था. सो दीज आर द बायोटाइट्स. बायोटाइट पूरा ऐसे ऐसे बैठा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे.
You understood now why the biotides are grown like this? So this biotide, this defines a deformation fabric. Deformation fabric. Understood? So this you can say S1. This deformation fabric you can say S1. Now what he says, you know, now suppose the whole thing got refolded. Refolded मतलब कैसा होगा? Suppose I am telling you, ऐसा. I am just refolding it. You understand now what I am drawing? ऐसा. इसको मैं पूरा बेंड कर दिया. क्योंकि तो जस्ट वन फोल्ड में तो डिफॉर्मेशन स्टॉप नहीं हो जाएगा ना. It is a continuous process, million year process. So suppose this fold got refolded. Second fold develop किया इसमें. तो then we will say this is a F1 fold. पहले fold था. So this fold is a F2 fold. This fold is a F2 fold. So this interference part he will teach you in due course of time. But remember, suppose this fold was there and biotides have grown parallel to the axial plane. Now it has been refolded. Second fold developed. We are now considering about the biotides. Now what will happen to those biotides? ये biotides सब कैसे थे? पहले ऐसे थे ना, ऐसा ऐसे देखो. पहले ऐसे थे ना. These are the biotides. Yes, S1 planes of it. ये जो biotide grain पहले थे, now they are also deformed. यहाँ जब आएंगे, the hinge zone में जब आएंगे इधर, ये जो पहले जो बायोटाइड था, बायोटाइड पहले था ना, बायोटाइड जो प्री एग्जिस्टिंग, दिस डेवलप ड्यूरिंग F1 टाइम में, तो ये जो इंडिविजुअल बायोटाइड ग्रेन होगा, वो क्या होगा? वो रहेगा नहीं इसे, क्योंकि दिस हैज टू बी डिफॉर्म्ड आल्सो. सो दे विल डेवलप लाइक दिस स्ट्रक्चर. इफ यू सी अंडर माइक्रोस्कोप, ए बायोटाइड ग्रेन विल शो this type of feature. What are these things? Granulation. These are granulations or the kings. Individually, kings or granulation inside same biotide. Granulation. This indicates this biotide has developed earlier. Biotide पहले develop हो गया था. बाद में जब deformation हुआ, another folding came. They are all granulated or kinked. मेरा बात समझता है कि नहीं समझता है? So this granulation or kinked biotide indicates this biotide was pre-kinematic to this fold. Remember this part? Not telling. अभी ये जो biotide को आप देखेंगे ना, जिसका अंदर किंक है, उसको आप क्या बोलेंगे? ये पहले था, बाद में इसको किंक कर दिया कोई आके. So with respect to this F2 fold, जो बाद में जो fold हुआ, with respect to that fold, this biotide is pre-kinematic. मेरा बात समझा? ये synkinematic नहीं है. But this biotide, जिसमें kink नहीं था, that is synkinematic to this fold. You have followed my point? With respect to F2, pre-kinematic. Up to with respect to F2 fold, ये पहले था ना, क्रिस्टलाइज हो गया बैठा था ना उधर, ये खाली किंक हो गया, डिफॉर्म हो गया, रिक्रिस्टलाइज नहीं हुआ है, इसलिए ये प्री काइनेमेटिक हो गया. इसका क्रिस्टलाइज नहीं, प्री काइनेमेटिक टू F2 फोल्ड. मेरा बात समझा कि नहीं समझा ये पॉइंट को? नहीं, सम पीपल आर स्टिल नॉट क्लियर इन देयर फेस. टेल मी, थोड़ा कंप्लीट करने दो, आई विल रिपीट इट. ना बट मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, इसका जो एक्सियल प्लेन में है ना, ये जो एक्सियल प्लेन ऑफ द F2 फोल्ड, यहाँ भी बायोटाइड ग्रोथ करता है. न्यू बायोटाइड्स विल ग्रो. ये पुराना बायोटाइड टूट जाएगा, पुराना बायोटाइड टूट जाएगा. द किंक्ड बायोटाइड विल बी डिस्ट्रॉयड करके न्यू बायोटाइड विल ग्रो. दैट न्यू बायोटाइड विल बी पैरेलल टू F2 एक्सियल प्लेन. कि अभी F2 फोल्डिंग इज टेकिंग प्लेस. सो दिस न्यू बायोटाइड will be parallel to F2 axial plane. इसका अंदर किंक नहीं होगा,
ये बिल्कुल फ्रेश होगा। ये सिन काइनेमेटिक टू F2 फोल्ड, F2 फोल्ड। मेरा बात समझा कि नहीं समझा? तो अब अभी देयर आर टू बायोटाइट ग्रोथ। एक बायोटाइट तो यहां ग्रोथ हुआ था F1 टाइम में, जो S1 बनाया था, सिन काइनेमेटिक टू F1। अभी नाउ देयर इज अनदर बायोटाइट which is sin kinematic to F2. F2. Both are biotides only. So you have to identify which one is sin F1, which is sin F2. मेरा बात समझा ना? कैसे आता है sin और F2? और ये इसको क्यों आप बोलेंगे pre? Why you say this is pre? Because this is deformed. Deformed. इसका मतलब इसका बाद ही डिफॉर्मेशन हुआ, F2 डिफॉर्मेशन हुआ। सो F2 के साथ ये हो गया पहले प्री काइनेमेटिक टू F2, बट दिस इज सिन काइनेमेटिक टू F1। F1 टाइम में डेवलप किया था। मेरा बात समझा कि नहीं समझा? दिस इज नॉट ट्रू ओनली फॉर बायोटाइड्स, एनी मिनरल। हम तो यहाँ दो फोल्ड दिखाते हैं, आपको फील्ड में तो ही विल शो यू मल्टीपल फोल्ड्स। सिमिलरली सपोज आई गिव ए एग्जांपल ऑफ अ क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज ये तो बायोटाइट हम लिया है, क्वार्ट्ज ना। ये जो डिफॉर्मेशन हुआ ये तो बायोटाइट क्रिस्टलाइज किया, बट दिस एरिया में, ये एरिया में तो क्वार्ट्ज था। सो क्वार्ट्ज विल क्रिस्टलाइज ना, quartz will also crystallize like this, ऐसा। ये भी पैरेलल टू एक्सियल प्लेन करके क्रिस्टलाइज करेगा। बायोटाइट appears to be more aligned because of its nature, but quartz is not so much aligned, but it will develop like that only, parallel to axial plane. Now same quartz, now अभी क्या होगा? ये quartz इधर, ये जो quartz है इधर क्या होगा? पहले तो quartz था, ये क्वार्ट्ज का अंदर आप देखेंगे तो ऑन्डुलोज एक्सटिंक्शन दिखेगा। इसका अंदर क्या दिखेगा? ऑन्डुलोज एक्सटिंक्शन। यू अंडरस्टैंड ना? ऑन्डुलोज एक्सटिंक्शन, ऑन्डुलोज एक्सटिंक्शन मींस इट विल नॉट एक्सटिंक्ट एट द सेम प्लेस। इस तरफ वो भी लगेगा, कभी डार्क बैंड आएगा, कभी व्हाइट बैंड आएगा, दैट इज कॉल्ड ऑन्डुलोज और वेवी एक्सटिंक्शन। सो दिस क्वार्ट्ज कैन विल शो वेवी एक्सटिंक्शन और ऑन्डुलोज एक्सटिंक्शन। Why it will show so? Because this is sin to F1। F1 टाइम में क्रिस्टलाइज हुआ था, अभी F2 डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो F2 डिफॉर्मेशन का टाइम में ये क्या हुआ? डिफॉर्म हो गया। डिफॉर्मेशन होने के बाद बिकॉज ऑफ द डिफॉर्मेशन इट इज डेवलपिंग ऑन्डुलोज एक्सटिंक्शन। आप मेटामॉर्फिक स्लाइड में मैंने ऑन्डुलोज एक्सटिंक्शन यू मस्ट बी सीइंग ना। तो फिर ये तो F2 के लिए F2 विथ रेस्पेक्ट टू F2 इट इज प्री काइनेमेटिक। जैसे बायोटाइट प्री काइनेमेटिक, बायोटाइट में किंक होता है, इसमें ऑन्डुलोज एक्सटिंक्शन होता है। समझा कि नहीं समझा?